Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to PMDC online lecture room. It's your lecturer Sadia Saba. Today we will discuss the topic from chapter number 4, Guidance and Counseling, and our today's topic is counseling process. We will explain the counseling process in detail in this lecture. So, the counseling process is a planned, structured dialogue between a counselor and a client. काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? ये एक तरह के डायलॉग्स होते हैं। काउंसलर जो होता है वो काउंसलिंग करता है अपने क्लाइंट की, जो पेशेंट होता है उसकी, और ये बिल्कुल एक प्लान और स्ट्रक्चर डायलॉग्स होते हैं। ऐसे ही नहीं होता कि कोई ये हवा में बातें हों। ये एक प्रॉपर प्लान किस्म का, स्ट्रक्चर किस्म के डायलॉग जो है काउंसलर जो है वो डील करता है इसमें क्लाइंट के साथ। इट इज़ अ कोऑपरेटिव प्रोसेस इन विच अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल helps a person called the client to identify sources of difficulties or concerns that he or she is experiences। यानी कि जो मुश्किलात जो है वो उसको पेश आ रही हैं तो उसको उसकी मदद करता है। ये जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल होता है जिसको हम लोग काउंसलर कहते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कोऑपरेटिव प्रोसेस है जिसमें जो ट्रेन प्रोफेशनल होता है जिसको हम लोग काउंसलर कहते हैं, वो अपने पेशेंट की, उस क्लाइंट की हेल्प करता है ताकि उसकी जो मुश्किलात उसको हो रही हैं, किन वजूहात की वजह से हो रही हैं, उन मुश्किलात के साथ कंसर्न क्या है उसका, जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, सो उसको सॉर्ट आउट करते हैं और उसको कम करने की कोशिश करते हैं और उसमें से उसके लिए हल ढूंढता है। टुगेदर दे डेवलप वेज टू डील with and overcome these problems so that person has new skills and increased understanding of themselves and others. Next is the counseling process in detail. You can say that the term counseling process implies continuous change or changes that takes place, or rather which should take place in the client in promoting personality changes in a desired direction. So the kind of change that the counseling process aims at its briefly. सबसे पहले हमें एक चीज़ तो ये पता है ना इसमें काउंसलिंग प्रोसेस में कि इसमें सबसे पहले एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है उसकी असेसमेंट करनी होती है, जो गोल्स होते हैं वो सेट करने पड़ते हैं, फिर काउंसलिंग इंटरवेंशन होती है, उसके बाद वो एवेलुएट करता है कि किस चीज़ को टर्मिनेट करना है कि नहीं। अवेयरनेस ऑफ द क्लाइंट में हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले एक जो उसको है काउंसलर को एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना पड़ता है। सो द फर्स्ट इंटरव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट to become aware of the from the part of the client, we can say that. So this is because the client is reading the verbal and the non-verbal messages and make inference about the counselor and the counseling situation, right? So is the counselor able to emphasize with the client, or does the client view the counselor as uh, mm, as a person who can help him? Second, we can say that a behavioral change, right? So behavioral change is a in a desired direction through which the client can achieve his goals. Uh, you can explain it by that the goals are the results or outcomes that client wants to achieve at the end of counseling. So sometimes you hear both counselor and the client complain that the counseling session is going nowhere. This is where goals play an important role in giving direction. Goals should be selected and defined with care. These are the guidelines, like you can keep in mind this, that the goals should relate to the desired end or end sought by the students, or goals should be feasible. Goals should be defined in explicit and measurable terms, and goals should be within the range of the counselor's knowledge and skill. So एक ये है कि काउंसलर को एक चीज़ ये जहन में रखनी चाहिए ना कि ये बार बार ऐसा ना हो कि हर मौके पर उसको एडवाइस दे रहा है, लेक्चर शुरू कर देता है, या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, एक्सेसिव क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है, आस्किंग अबाउट every time that why you do that and why you are doing this,
اور how did that make you feel. سو اس کو اپنا کچھ ایسا ایٹیچیوڈ اپنانا ہوگا کہ تاکہ اس کے بیہیویئر میں چینج ہو، تاکہ وہ اپنا گول ایزلی اچیو کر سکے. تھرڈ پوائنٹ از understanding his potentialities and also the limitations and how to utilize them best in achieving his goal. So the counseling process by and large is the name for all problems and for all the individuals. However, certain important differences need to be clarified. In vocational and educational counseling, the major emphasis is on counseling factual information and helping the clients understand this information in a proper perspective. So, in such situations, the emotional problems, though present, are not the main concern of the counselors. We can say that in educational and vocational counseling, the decision making and planning model occupies the counselor's attention, such that he tries to help rational problem solving processes. So, clarify self concept, values, etc. In this context, counselors are often concerned with the appropriate choice of educational goal or careers. So, the educational or the vocational counseling proceeds in a stepwise manner. Or we can say that establishing the goals, or it can also be keep in mind that establishing a relationship, stating the problems, elaborating and explaining the issues. So we will discuss all of them in our next lesson. Then how we can say that the education or the vocational counseling proceeds in which manners. I hope you understand this lecture. Thank you very much.